So visible to all of you? Yes, sir. କଣଟା ହେଲା? So मैक्सवेल्स इक्वेशन ये सब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो चैप्टर खत्म हुआ था. So today we'll solve some problems on this chapter electromagnetic waves. ସେ ଯୋଉ ରେଡିଏସନ ପ୍ରେସର କହିଥିଲା ସାର୍ କଣ? ହଁ କହୁଛି. So ଏଟା ମୁଁ କହିଥିଲି electromagnetic waves ର equation, that is E equal to Em sin kx minus omega t, where Em is the amplitude, or you can say the maximum, okay, maximum value, sin kx minus omega t, because these are all like they have two components, sinusoidal components, that is electric component and magnetic component, mutually perpendicular to each other. So that is why, and the waves are represented in the form of wave vector, that is k. K is equal to 2 pi by lambda, that is lambda is the wavelength of the wave, okay, wavelength of the wave. And x minus omega t, omega is angular frequency, 2 pi nu, where nu is the frequency of the wave, and t is what? Time. गोटे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रे गोटे वेव केते दूर प्रोपागेट करिछि. सो दीज आर ऑल माने रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस. So Em sin kx minus omega t, similarly Bm sin kx minus omega t. So we have all studied about how experimentally Frank and Hodge confirmed the existence of electromagnetic waves, and by using an LC oscillator uh, we can produce electromagnetic waves. Okay, so electromagnetic waves, they satisfy the laws of reflection, refraction, interference, and light is a form of electromagnetic wave. Light chapter I am पढ़िबा. So energy transport and the Poynting vector I have already studied. The rate of energy transport per unit area is described by a vector that is called Poynting vector. So Poynting vector का जो physical significance है वो यही बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है. So that is the main motive of the this Poynting vector. किस डायरेक्शन में एक वेव प्रोपागेट करता है. So that Poynting vector defines that phenomena. Okay. So S stands for Poynting vector. So since it is a vector quantity, that is why vector symbol is used. So E cross B divided by mu 0, where mu 0 is the magnetic permeability. E is electric field and B is magnetic field. Okay. So ता अर्थ कौन? Whenever electric field is in x direction, magnetic field should be in y direction, and electromagnetic wave should propagate in z direction. Mutually perpendicular directions re सबवेले they will propagate. Okay. So SI unit of this Poynting vector is watt per square meter, W by meter square. Okay. Similarly, तमु जदि पचारथियो what is the dimension of this Poynting vector, write the dimension of this Poynting vector. You can convert watt power माने power रो dimension केते divided by length square. You can write the dimensions of Poynting vector. Okay.
So energy transport per unit area per unit time. So energy divided by time divided by area instantaneously. Suppose gote particular time re ame dekhuche, so power by area it will give you the pointing vector. तापरे हमें देखिबा कोन, सो E cross B ताकू जदि हमें E cross B since they are in mutually perpendicular directions, so E cross B माने EB sin 90 degree, so EB divided by mu 0 हमें एमती भी ताकू रिप्रेजेंट कर परियो. Or you can write S is equal to 1 by C mu 0 E square. Why C mu 0 E square? Kind E by B, I have already said it, E by B is equal to what? C, that is velocity of light. Light. Okay, any particular instant रे जदि हमें देखुचे E by B is equal to C. Similarly हमें एमती भी नहीं परिवा E0 by B0 माने amplitude जदि देखिबा is equal to C0. Anything you can represent. Okay, so similarly this is also another form of pointing vector. 1 by C mu 0 E square. कहीं हमें B टाको कन्वर्ट कर देले E रे हैला, इटा गोटे फॉर्म. तापरे आ गोटे देखिबा व्हाट इज इंटेंसिटी. सो दिस एवरेज वैल्यू ऑफ दिस पॉइंटिंग वेक्टर S average, that will give us the intensity, that is an energy transport rate as a function of time. So that will give us the value of intensity. Okay, so energy divided by time divided by area ର average value जदि हम देखिबा, so power by area जोटा हम लिखुतली ता पूर्व तार average value गोटे माने जेतेले हमें गोटे कोन गोटे पर्टिकुलर वेव जेतेले प्रोपागेट करछि, गोटे वेव तो प्रोपागेट करनी, तो हमें गोटे 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 बीम ऑफ वेव्स, लेट अस कंसीडर ए बीम ऑफ वेव्स आर प्रोपागेटिंग. ओके, तो सही केस रे हमें सही पर्टिकुलर वेव रो हमें केमती ताको एवरेज वैल्यू ता जदी कैलकुलेट करिगा, दैट विल गिव माने सही एका जिंस पॉइंटिंग वेक्टर मींस द इंटेंसिटी ऑफ ए वेव. You can say intensity of a wave or pointing vector ताको represent करे. Okay, so I is equal to S average. तापरे मु कोन कहली लास्ट क्लास 1 by C mu 0 E square रा average. तापरे 1 by C mu 0 E can be represented like this. E is equal to EM sin kx minus omega t, kx minus omega t. पूर्व स्लाइड रे देखिली. सो ए टोटल क्वांटिटी रो स्क्वायर हे जिवो. सो EM square sin square kx minus omega t का एवरेज वैल्यू. सो ए जो एवरेज वैल्यू टा मु नौची ओवर ए फुल साइकिल, जते गोटे वेव ए जगह रो एमती जाई पुनी एठी जाई पहुंचुची, तो थीटा वैल्यू जो sin square थीटा रो वैल्यू फॉर एनी एंगुलर वेरिएबल, ओके, सो सेठी सबले हाफ हुए. तो सेथि पई सो एटा को कोन रिप्रेजेंट कराला, से जो EM ERMS बोली ताको कहला, माने जो E टाको जदि हमें एवरेज हमें नबा रूट मीन स्क्वायर. मुझे जंती कहली सपोज लेट अस टेक ए बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ता माने ERMS E रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू EM बाय रूट 2 गोटे टर्म आसिला, माने मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रूट 2. सो इंटेंसिटी इट कोन हो जिवो, so 1 by C mu 0, देखो 1 by C mu 0 E RMS रो स्क्वायर, हमें E स्क्वायर रो एवरेज टाको हमें एठी नौचे कोन E RMS. अच्छा, ता माने हमें कोन एठी रिप्रेजेंट करि परिबा, I इंटेंसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू 1 by C mu 0 E RMS स्क्वायर बदल रे हमें कोन लिखि परिबा, EM by root 2 EM by root 2 रो स्क्वायर. So 1 by C mu 0 EM square root 2 रो स्क्वायर हे जिवो कोन 2 हैला. एतरक बुझी पारलो से जो लास्ट क्लास रे की प्रॉब्लम पचारथलो ब्रजेश्वर. सो कोन हबो इंटेंसिटी रो वैल्यू टा, से जो प्रॉब्लम गोटे पचारथलो ना कोन. yes sir. हैला, so this is what, this is amplitude, this is called amplitude. EM is called amplitude. Intensity is directly proportional to amplitude ro square मु कहथिली लास्ट क्लास रे. तो this is the basic idea. Okay, so 1 by C mu 0 EM square by 2 हमें लिखि परिबा. अच्छा, this also can be represent this equation, ये जो
1 by c mu 0 em by 2 1 by c mu 0 intensity is equal to 1 by c mu 0 कौन लिखले e m square divided by 2 आमे जो एटा लिखिले आको जदि मैग्नेटिक फॉर्म रे आमे लिखिया चाहिए मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म रे लिखिया चाहिए we know what em by bm is equal to c हैला so em को आमे जदि मैग्नेटिक c bm so 1 by c mu 0 c bm रो स्क्वायर डिवाइडेड by 2 अच्छा सी सी एटी गोटे सी स्क्वायर कटि गला सो आमे एटी कोन लिख परिबा हाफ सी बी एम बाय म्यू 0 इंटेंसिटी रो दीटा फार्मूला तुमको दे दी you have to remember गोटे हला इंटेंसिटी is equal to half cbm by mu 0 and intensity is equal to half em square 8 bm square हो so half em square एटा जोटा half em square by c mu 0 इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड जब है तो c डिवाइड हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जब है तो c मल्टीप्लाई हो रहा है और म्यू जीरो दोनों डिनोमिनेटर में याद करने के लिए इजी है ठीक है सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन तापर हमें मु जोटा कहउथली रेडिएशन प्रेशर टिके रहि जा गोटे प्रॉब्लम आके देखिया तापर से रेडिएशन प्रेशर मु आउथरे कहबी so what is the intensity of a traveling plane electromagnetic wave if bm is equal to this much tesla 1.0 into this much tesla ये जो I इक्वल टू हाफ cbm स्क्वायर बाय म्यू 0 पकड़ लो हाँ so intensity is equal to half कौन लिख ली cbm स्क्वायर cbm square बाय म्यू 0 by mu 0 आइदर तमे गोटे एटलिस्ट इक्वेशन मन रख जदि इलेक्ट्रिक फील्ड ता मन रख किछि असुविधा नै e m square by c mu 0 एटा में मन रखिबा ठीक अछि हमें एटा मन रखिबा आ गोटे जिंस सब बेले हमर मन रहइबो e by b em by bm किंबा e by b is equal to c तो we can convert this equation जदि भी मन न रहउची गोटे जिंस एटलिस्ट मन रख so putting this equation into this problem so we'll get half into 3 into 10 to the power 8 what is c 3 into 10 to the power 8 meter per second into bm का वैल्यू दिया है 1 into 10 to the power 4 tesla divided by what is the value of mu 0 4 pi 4 pi and 10 to the into 10 to the power minus 7 अच्छा 4 pi into 10 to the power minus 7 जोटा अछि ताकू जदि हमें करिबा गोटे वैल्यू जदि बाहर करिबा हमें जेमति 1 by 4 pi epsilon 0 रो वैल्यू गोटे मन रखथिले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 by 4 pi epsilon 0 सब बोले 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9 हम सब बोले मन रखिचे हैला सेमति 4 pi into 10 to the power minus 7 mu 0 रो वैल्यू केते 4 into 3.14 into 10 to the power minus 7 जदि करबा so हमें पाइबा 1.26 into 10 to the power minus 6 एटा मन रखो ए वैल्यूटा सब बेले पाई फॉर्म रे देइथियो बोली माने नै आ सब बेले हमें 22/7 की 3.14 मल्टीप्लाई करी की बाहर करबानी so डायरेक्ट एटा लिखिबा 1.26 into 10 to the power minus 6 so half into 3 into 10 to the power 12 divided by एटी कोन 1.26 into 10 to the power minus 6 अच्छा 10 to the power minus 6 10 to the power 12 केते हला ऊपर को पळेबो 6 टा 10 to the power 18 10 to the 18 power 18 10 to the power अच्छा 18 3 by 2 केते 1.5 1.5 हला 1.5 divided by 1.26 126 कर दबो जति आसिला 1 point sir something 1.18 into 10 to the power 19 1.18 into 10 to the 10 power to the 9 power 19 19 so this will be your answer
किंतु एटा तमे बहुत भूल कल कहीं भूल कल 4 पाई into 10 to the power 7 ना -7 हो -7 -7 अच्छा अच्छा एठी मते गोटे जिंस मत को सो सो ये जो bm है ना यहाँ पे ये -4 है मैं गलती से इसको 4 लिख दिया हूँ सो एटार स्क्वायर हबो ना नहीं bm स्क्वायर परा एटी हम स्क्वायर करने यस सर हाँ यस सर ହେଲା ଆଉ ଏଟା -4 ଏଟା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛି ଏ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି 10 to the power -4 1 into 10 to the power -4 टेस्ला 10 to the 4 टेस्ला ହେଲେ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି so 10 to the power 8 ଆଉ ଏଠି 10 to the power -8 cancel ହେଇଯିବ so finally you will get this answer and this will be 1.2 into 10 to the power 6 10 to the power 6 watt per meter square watt per meter square. This will be the intensity. Intensity माने कौन? Pointing vector. Pointing vector unit कौन? Watt per meter square. So this will be your value. तापरे हाँ इटा गोटे देख so in a plane electromagnetic wave the electric field varies with time the electric field varies with time having an amplitude 1 volt per meter अच्छा ता माने कौन एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट पर मीटर व्हिच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू टा सब बेले इलेक्ट्रिक फील्ड रो यूनिट टा वोल्ट पर मीटर हम जानि छे सो em एम्पलीट्यूड माने सिंपली पुट em is equal to 1 volt per meter okay the frequency of the wave nu is equal to 0.5 into 10 to the power 15 hertz. The wave is propagating along z axis. So x, y, z axis. So wave is propagating along z axis. Let us consider. So what is the average energy density of the electric field? What is the average energy density of the magnetic field? And what is the average energy density of the total field? And what is the amplitude of the magnetic field? The question is asking. So first of all, ये जो D fourth problem है, what is the amplitude of magnetic field? Em by Bm is equal to C. Em by Bm is equal to C, we know. yes sir So Em by C is equal to Bm. So it is asking what is the amplitude of magnetic field. So Em by C. Em is 1 volt per meter. 1 divided by 3 into 10 to the power 8 meter per second. So 1 by 3, 3.33 into 10 to the power -9 Tesla. କାହିଁକି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ପଚାରିଛି ତ ତାର ୟୁନିଟ କଣ टेस्ला 3.33 into 10 to the power -9 ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଟା ଇରେଜ କରୁଛି ନହେଲେ ହବନି କଣ ହେଲା ମୋର ପେନ୍ ଟ୍ୟାବ ଟା କାମ କରୁନି ବାର ବାର ରାଇଟ କ୍ଲିକ କରିବାକୁ ପଡୁଛି अच्छा तापरे एटा हला तापरे व्हाट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पढिला बेले मु कहिची एटा व्हाट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये जो दीटा फार्मूला मु कहिची 1 by epsilon 0 e square is the energy density of the electric field and energy density of the magnetic field is half b square by mu 0 देखो यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे mu 0 जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वो डिवाइडेड बाई हो जाएगा ओके और एक ये एक इक्वेशन में बोला था ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं 2-3 बार यूज किए हैं इसको भी याद रखना है 1 by root over of mu 0 एप्सिलॉन तो हाँ so this will be average energy density of the electric field ue बोली तक लिखा small ue is equal to what half epsilon 0 e square है ना
So what is E? E0 by root 2 by Yes, sir. EM by root 2. So EM we know, epsilon 0 we know 8.854 into 10 to the power minus 12 epsilon 0 value into E0 by root 2. E0 is what? By EM is what? 1 volt per meter 1 divided volt per माने meter 1 by root 2 1 by root 2 ହେଇଗଲା तो एटा को हमें सॉल्व करबा तापर हम पाइबा 2.21 into 10 to the power minus 12 joule per meter cube joule per meter cube energy density रो value unit टा कोन होइटी अब जूल पर मीटर क्यूब जदि यूनिट न मन पड़ुची ताले एप्सिलॉन 0 रो यूनिट पकेबा इलेक्ट्रिक फील्ड रो यूनिट पकेबा जहां लास्ट को पाइबा सेटा को लिखिबा आंसर बुझियला 2.21 into 10 to the minus 12 answer you will get E0 by root 2 ना EM by root 2? अरे हेला EM is equal to E0 कोई बुक में E0 देता है कोई बुक में EM देता है उससे कोई मतलब नहीं है आई एम सेइंग अबाउट एम्पलीट्यूड ओके एम्पलीट्यूड टाको हम EM हिसाब लिखते हाँ ठीक अच्छे EM मु लिखि देछि तमर जदि बही रे E0 देथिबो तो यू राइट E0 उसमें क्या है ओके यस सर तापर व्हाट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड UV is equal to half V square by mu V naught square by by mu zero mu 0 बट एठी आमे V square ता कोन एठी जानि नै हमकु कोनोसी प्रकार रो डाटा एठी देइनी डाटा देइछि आमे तो एठी BM बार कले टिके पूर्वरु सो BM by root 2 भी पके दे परिबा किंतु एते कथा न करी कि आमे सिंपली एठी व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आमे बार कर दे what will be the average density of magnetic field without solving this equation okay what will be the average energy density of magnetic field I have already said I have always said जेतले properties of electromagnetic field पढौतली electric field रो जति electric field and magnetic field should be in phase with each other average energy density of the electric field and magnetic field should be in phase with each other mu koichi तो यार एनर्जी डेंसिटी जति कि हबो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रो मैग्नेटिक कंपोनेंट रो मध्ये सेति कि हबो हैला सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी दी जनकर सब बेले समान हुए तो सेति पई यू कैन राइट सिंपली 2.21 into 10 to the power minus 12 जूल पर मीटर क्यूब दोनों का हमेशा एनर्जी डेंसिटी सेम रहेगा दोनों कंपोनेंट का so what is the total U is equal to UE plus UB माने 2.21 plus 2.21 into 10 to the power minus 2 4.42 into 10 to the power minus 12 minus 12 joule per meter cube and fourth equation we have a fourth point we have already solved what is the amplitude of the magnetic field okay so the next point a plane electromagnetic wave propagating in x direction has a wavelength of 6 mm wavelength lambda is equal to 6 mm meter convert कर दो 6 into 10 to the minus 3 meter the electric field is in y direction and has a maximum magnitude of E0 is equal to E0 by E0 is equal to EM is equal to 33 volt per meter मैं क्यों बार बार ये जो EM E0 ये सब दोनों टाइप का नोटेशन लिख रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा है वो EM लिख सकता है E0 लिख सकता है उसमें कोई मतलब हड़बड़ी नहीं होना है ठीक है तो देखना है ये चीज दोनों सेम है नोटेशंस वेरी बट फिजिक्स रिमेन सेम
ओके, सो 33 वोल्ट पर मीटर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट, एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट. So what are the write the suitable equations for electric and magnetic fields as a function of x and t. Write suitable equations. Okay. अच्छा, हमें कौन जानी चाहिए? This is the form. E is equal to E0 sin kx minus omega t. ये हम लोगों को पता है. Similarly, B is equal to B0 sin kx minus, बुझल? ये दीटा हमें जानी. These are the basic form of equations. But एठी हमको कौन देछि? लैम्डा देछि. लैम्डा देछि माने हमें फ्रीक्वेंसी बाहर कर परियो. यस सर. ହେଲା. अच्छा, ओमेगा हमें बाहर कर परियो ना नहीं? 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू और 2 पाई c बाय लैम्डा, 2 पाई c डिवाइडेड बाय लैम्डा. अच्छा, 2 पाई into 3 into 10 to the power 8, 10 to the power 8 divided by what is lambda given? 6 into 10 to the power minus 3, 6 into 10 to the power minus 3. Okay, so pi into 10 to the power 11, pi into 10 to the power 11 radian per second. ହେଲା, ये 2 into 3 6 6 कटि गला, 10 to the power minus 3 ऊपर पळेला, 10 to the power 11 into pi. So this is omega, angular frequency. Similarly, what is ये क्या उसको what is k? K is what? 2 pi by lambda. K माने 2 pi by lambda. Wavelength already we know, so 2 pi divided by 6 into 10 to the power minus 3. 1 by 3 into 10 to the power 1 by 3 pi eta mane eta he jo kete 0.33 0.33 into 0.33 pi into 10 to the power minus 3, sorry 10 to the power 3. Okay. किंबा 0.33 pi into 10 to the power 3 जो टाइम में लिखिले, so we can write 33 pi at 330 pi. 330 pi भी हमें लिख परिबा. Okay, so in this form we can write. So हमें एठी हाँ, what is E0? E0 already given 33 volt per meter. 33 volt per meter. अच्छा, what is B0 now? E0 by c कर दो. E0 by c कर दो. So E0 by c करो 33 divided by कौन? 3 into 10 to the power 8. So that will be 11 into 10 to the power minus 8. बुझला? अच्छा, एबे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट लिखिबा. So एठी कोन लिखिछि? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is propagating in x direction and electric field is in y direction. So definitely magnetic field should be in z direction. Yes sir. Yes sir. So EY component is equal to E0 sin omega अच्छा omega t minus kx किंबा sin kx minus omega t. बहुत जगह kx minus omega t. Generally the form is E0 sin kx minus omega t एमती लिखा जाए. So k जगह हमें जो k टा बाहर कले एठी we can put this k value and we can put this omega value. Similarly, EBZ कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन. सो इक्वल टू B0 का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं दैट यू हैव टू पुट in this place. Okay, sin similarly kx minus omega t एमती पकेबा. So these are the two form of equations. जो वैल्यू उडा तमे सब पाइछ ओमेगा k ए सब जो वैल्यू पाइछ x बदल अच्छा k एठी जो x रहिछि एठी k x न हे कि एठी कोन हे जो एटा k y हे जो. Similarly एटा k z हे जो.
because these are माने different axes. Okay, so तार value गुडा का हमें पकेवा पकेगी हमें common factor नेगिरी ताकू बाहर कर दी पारे बुझियला Yes, sir. हाँ आ गुटे जिंस मु कहूची एठी सर मैग्नेटिक फील्ड टा कोन z डायरेक्शन है हाँ मैग्नेटिक z डायरेक्शन काहे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन x डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन y डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन रे जाउछ इट शुड Yes, बी sir. म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑल द थ्री माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गोटे पटे गले मैग्नेटिक फील्ड गोटे पटे जिवे आरटा आर पटे जिवे ओके दबर खाली वैल्यू पके देब हाँ वैल्यू पकेबो जहाँ जहाँ वैल्यू तुम बाहर कलो सेटा पकेगी विभिन्न ऑप्शंस देथिबो ये जो राइट द सुइटेबल इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t उसमें क्या होगा a में e इक्वल टू समथिंग b इज इक्वल टू समथिंग सिमिलरली b पॉइंट में e इक्वल टू समथिंग b इक्वल टू समथिंग ऐसे ऑप्शन दिया होगा तमर तो सब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप ना तो तुमको प्रथमे एटा जिंसटा बाहर करिया पड़िबो ए वैल्यू गुडा को सहित से ऑप्शंस गुडा करे देख तमर जते टेस्ट पेस्ट हबो से क्वेश्चन गुडा को जदी ता बगैर थिबो से मान जे टेस्ट करंती तो नहले मु ए भलिया गोटे दिटा क्वेश्चन दे देबी ओके अच्छा आ गुडी जिंस मु कहबी एठी don't consider this one right now just see मु कोन कहूची so आमे जो e is equal to e0 sin kx minus omega t बोली हमें एमती नौचे गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो इक्वेशन हमें एठी एमती भी नहीं परिबा अरे यार बंदा को भी एबे ही आसीबार थिला sin kx by omega minus t sin ओमेगा ओमेगा टा को हमें यदि इटी sin ओमेगा यहाँ पे कॉमन ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा kx डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस t हो जाएगा अगर ओमेगा को हम लोग को कॉमन लेना है सो वी कैन राइट लाइक दिस ओके अच्छा k by ओमेगा व्हाट इज k by ओमेगा k टा कोन 2 पाई by lambda lambda divided by 2 pi nu is omega so 2 pi cancel c रही जो हाँ 1 by lambda mu is equal to what हो जाए क्या हो जाएगा lambda into mu wavelength into frequency is what c speed 1 by c तो आमे एठी एमती भी लिखि परिबा e0 sin omega x by c minus t এই ফর্ম রে মধ্য ইকুয়েশন কু লেখা যায় तंता सेठी हमें के बाहर करियानी के आउ बाहर कर परिबेनी हमें के न बाहर कर परिबे जदी हमको ओमेगा देची माने मो कहया कथा दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन तुमको को टाइप रो देची सो यू हैव टू फाइंड आउट माने को क्वेश्चन रे केमती देची कोन क्वेश्चन देची सो डरिबोनी केबे माने तुम देखिबो आगो अरे सर तो कहितले kx - ओमेगा टी ये कोन गोटे अलगा टाइप रो देची अच्छा को जगह रे मु आगो को गोटे प्रॉब्लम अछि देखैबी सेठी साइन बदल रे cos देची सो एटा को जदी हमें cos फॉर्म में लिखिबा सो देखो ओमेगा टी माइनस kx हे जिवो माने गोटे आर सीक्वेंस चेंज हे जिवो अब ना नहीं सीक्वेंस टा चेंज हे जिवो हला तो सेति में these equations can be represented in the form of sine and cosine functions so don't get confused okay जदी भी देची हमें हमें सब बेले we have to consider this magnitude part and सब बेले हमकु we have to remember this formula E0 by B0 is equal to C. These are the basic idea we have to always follow. जो क्वेश्चन जैसा भी फॉर्म में दिया है कोई डरने का नहीं है ठीक है सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करले तमे भी इजी हे जिवो तम मन को जानि बारे देखौ छी तुमको आ गोटे दिटा प्रॉब्लम देखौ छी सर ए हां साइन टा कॉस्ट केमते कन्वर्ट हबोनी तो काई हबोनी रे साइन सर टा को सेटा कॉस रे रूट कन्वर्ट नहीं कर कर परिए साइन टा नहीं सर कॉस रे सेटा कन्वर्ट रूट हबोनी बोली मु आज प्रथम सुनुची
ନାଇଁ सर हबो किंतु एटारे केमती माइनस टा चेंज करबे बोली कहले तो मु सेटा पचारथि कौच इक्वेशन देखिले जानि परिबा एई प्रॉब्लम टा आगो देखो मु आगु आगु आउरी प्रॉब्लम करियो. So if epsilon 0 mu 0 represent the permittivity and permeability of the vacuum, and epsilon and mu represent the permittivity and permeability of a different medium, so then what is the refractive index of the medium? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो तुम लोग पढ़े नहीं हो अभी तक, पर फिर भी बेसिक आइडिया, कोई प्लस टू साइंस जो पढ़ के आए हो, बेसिक आइडिया ऑफ द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. It is the speed of the light in the medium divided by speed of the light in vacuum. Okay, so C by C0 is the refractive index. ना कौन ना भूल कोई ना C0 by C हो. So this is C0 by C. So C0 by C. Refractive index का definition. It is the velocity of light in air by vacuum divided by velocity of light in a particular medium. This is the refractive index. अच्छा, हमें कौन जानचे? What we know? C is equal to 1 by root over of mu into epsilon. ये एक एक मीडियम का म्यू इंटू एप्सिलॉन, मतलब एक मीडियम में पर्टिकुलर उसका क्या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है. ठीक है. एंड C0 माने वैक्यूम रो सेमती पड़िबो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 हमें जानिचे. सो व्हेनेवर ए लाइट ट्रैवल्स थ्रू वैक्यूम, उसका एक और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करता है वैक्यूम में, या फिर एक मीडियम में मतलब वैक्यूम एज ए मीडियम और एयर एज ए मीडियम, तो उसका परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का वैल्यू जो 8.854 into 10 to the minus 12, 4 pi into 10 to the power minus 7, ये सब है. पर अगर मैं वैक्यूम या एयर में नहीं लेके मैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में लूंगा, एक ग्लास या फिर पानी में, उसको उसका परमिटिविटी कितना है या permeability कितना है, that we need to calculate. So those will be different values, those will not be the same. Okay, जो भी हम लोग अब तक पढ़े हैं, that is all about air और vacuum. Okay, so उसका वैल्यू दूसरा हो जाएगा. so वैल्यू जब दूसरा हो जाएगा तो उसका जो स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है, that may vary मतलब सेटा तमे मैं आगु पढिबा जे जनरली स्पीड ऑफ द लाइट पाखापाखि समान हुए, तो सेटा अलग कथा. बट फॉर इन जनरल केस आमे ताको देखिबा 1 by root over of mu epsilon and 1 by root over of mu 0 epsilon. Then what is the refractive index of the medium? So C0 by C is equal to 1 by root over of mu 0 epsilon 0 divided by 1 by कौन root over of mu into epsilon. So এটা কোন হই যাব উল্টি যাব. So root over of mu epsilon divided by mu 0 epsilon 0. Hala. So this is the refractive index of the medium. चारटा ऑप्शन देथिबो. 1 by root over of mu 0 epsilon 0 कोन ये पट सॉल्व करी देथिबो. So that we have to consider. जीवा आगु जीवा. सर जदी रे क्वेश्चन देथिबो कहले देथिबो ना, ए जो मीडियम रे जो वैल्यू गुडा देथिबो, हां वैल्यू जदी देथिबो, हां यस वैल्यू जदी देथिबो, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फार्मूला. रूट ओवर करबा, हमें जहा वैल्यू इट देछि सेठी पकेबा, एंड ए दीटा रो तो गिवन वैल्यू हमें सब बेले मन रखिया पड़ी. एटा देइ नथिबो किंतु ए दीटा देछि, ताले हमें सेटा को मल्टीप्लाई करी बाहर करियो. हला आगो जीवा. Yes sir. हाँ, the magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by this much. Okay, एटी देखो sin kx minus omega t मु लेखुतली, एटी देखो एटी गोटे प्लस सिंबल अछि. एटी तमे कहबो सर आप तो माइनस बोले थे, ये प्लस कैसे हो गया?
क्योंकि we are not consider सेटा गोटे आइडियल इक्वेशन ता बोली नुह whenever we are taking cross product, suppose we are taking E cross B, मु सबले कहिछि I cross J should be equal to K, पर J cross I is equal to what? Minus K. हाँ कि नहीं? यस सर सो प्रत्येक गोटे एक्सिस माने प्रत्येक डायमेंशन रो दीटा एक्सिस अछि, गोटे माने पॉजिटिव एक्सिस गोटे नेगेटिव एक्सिस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ता वेदर इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन वी डोंट नो. सो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन ये है kx minus omega t, but that can be positive, that can be negative depending upon the cross product. आमे सब वेक्टर देखुचे बरा, सो एटा स्केलर त नुह, तो सेतिपई केतेले पॉजिटिव हे जीवो, केतेले cos लिखिवो, केतेले sin लिखिवो. सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी फॉर्म. तमे एते भी माने भीतर को जीवार दरकार नै, मु जति कहूची सेति खाली सुनो हला. So B is equal to this much, seta gote given. The equation of magnetic field is given of the electron. So what is the wavelength and frequency of the wave? A question में बोला है, and write an expression for the electric field. जेमती magnetic field रो कहिची, जेमती सर हमें electric कंपेयर कर देने इक्वेशन देटा बाहर हाँ electric field रो value बाहर करियो दीची. Okay, so what is the wavelength first of all? केमती wavelength बाहर करियो? सर kx ओमेगा देछि. हाँ kx, k is this much, 2 पाई बाय लैम्डा से 2 pi by lambda. K is equal to 2 pi by lambda. So k is 0.5 into 10 to the power 3 is equal to 2 pi by lambda, or lambda is equal to 2 pi divided by this much quantity, 0.5 into 10 to the power 3. So किए गोटे सुआ बोबौची ताको टिके म्यूट करो. So एटा को जदि हम करबा, that will you will get 0.52 हेले एटा 4 pi हे जो 4 pi into 10 to the power -3. -3 So 4 into 3.14 ए सेटा करिगिरी ताको लैम्डा टा जोटा बाहर करिवो, तो एटा कोन हो 1.26 सेंटीमीटर नियो किबा एटा केते हे जीवो मीटर रे कन्वर्ट करले से अनुसार ताको 0.0012 मीटर हे जीवो हला, 0.00126 मीटर हला. ई सब वैल्यू जाई कि निजे घरे बाहर करछो ना नहीं, सब भूली जाउछो. निजे जाई टिके बाहर करथा, मु खाली आंसर लिखि देले कोन ताको ई क्वेश्चन टा पडिबो ना कोन तमरो, सेमति किछ माने नै. जते कंप्यूटिंग करिवो निजे निजे हैंड फ्री हो. तापर राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है. अच्छा अभी देखो, सो B is equal to B0. B0 is what? This much quantity. Sin 2 pi x by lambda. कहीं कि मु 2 pi नेली, kx टाकू मु भांगी देली, k टाकू 2 pi by lambda नेली प्लस t by t. नहीं परिबी ना नहीं एमती. एटा टेस्ला, ए t टाकू कंसीडर करंदी, एटा होची टेस्ला, दिस इज यूनिट, this is nothing, this has nothing to do with this t. Okay, this t is different, that t is different. अच्छा ए t टा कौन, जो बड़ो t टा एठी लिखिली, ए t टा कौन? टेस्ला. ए t टा टाइम कौन? टाइम. अच्छा ओमेगा t, ओमेगा into t हमें जानी चाहिए. सो व्हाट इज ओमेगा? 2 pi न्यू फ्रीक्वेंसी. अच्छा फ्रीक्वेंसी आउ टाइम पीरियड भितरे कोन रिलेशन अछि? mu म्यू equal इज to 1 इक्वल by टू 1 t. by t. तो 1 8 by t टा होची टाइम पीरियड. दिस टेस्ला इज समथिंग, माने ए जो मैग्नेटिक फील्ड रो यूनिट टा एठी टेस्ला देछि. एट देखो सेटा छाड़ दियो, से t नु होइला. So this is different t. Okay, so एठी हमको मागी ची what is the frequency of the wave. So how to calculate the what is the frequency of the wave?
So 1 by T is equal to nu. 1 by T is equal to nu is equal to what? 1.5 into 10 to the power 11 divided by 2 pi. बुझेला ए जो जिनछटा ओमेगा is equal to what? 2 pi nu is equal to 2 pi divided by T. मु सेईटा एठी लिखिछि ना हबनी के बुझी पालानी को All of you understood? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So 8 को जब तमे 1.5 into 10 to the power 11 divided by 2 pi इसका वैल्यू अगर निकालोगे pi का वैल्यू डाल के that will you will get 23.9 gigahertz. What is the माने unit of that is माने कौन 23.9 into 10 to the power 9 hertz. 10 to the power 9 hertz को कहबा gigahertz. हैला अच्छा write an expression for the electric field now. So what should be the expression for electric field एबे कुह हमें b0 रो वैल्यू जानी छे so e0 we can find out. Yes, sir. Yes, sir. e0 बाहर करो. What is b0? 2 into 10 to the power minus 7 ये जो है so उसका e0 कैलकुलेट करो. भुवनेश्वरी कोन पैरेट रखिछो की घरे? Yes, sir. वेरी गुड. ना डाकुची तमरो भुवनेश्वरी एम डाकुची. Yes, sir. हां सुकन्या कुह केते बाहरला? Sir, 6 into 10 to the power ठीक है 60 बाहरला sir. That's 60. 60, sir. 60 60 volt per meter. E0 is equal to 60 volt per meter. केमती फाइंड आउट करिबा E0 by B0 is equal to C. Equal to C. C. फार्मूला पकेले बाहरियो. ओके -7 अछि 8 अछि कोटे 10 रहि. तापरे नाउ वी कैन राइट लाइक दिस E is equal to 60 sin k. What is the value of k? 0.5 into 10 to the power 3 already देइछि 10 to the power 3 x plus कौन ओमेगा ओमेगा रा वैल्यू मध्ये आमी जानि छे 1.5 into 10 to the power 11 t एटी कोन हे जो वोल्ट पर मीटर एटी थिला टेस्ला एटी हे जो वोल्ट पर मीटर देला सिंपल किछि नाही हमें खाली इक्वेशन को देखि देखि कि लिखिबार अछि किंतु टिके तो एपट सौट हे गेले गला. sir हां एटी जो को प्लस सिंबल टा देछि हमें कोन ओमेगा टार वैल्यू एटी माइनस नउचे कोन ओमेगा टार वैल्यू नउचे माइनस सर जो kx माइनस ओमेगा टी ना हां हां एटी प्लस अछि कहले हमें ओमेगा रा वैल्यू कोन माइनस बोली कहि परबा एटी माइनस रे ओमेगा रा वैल्यू माइनस 1.5 ना से माइनस दैट माइनस इज हैज नथिंग टू डू विथ दैट माने कोन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा मु जेमति तमु कहली इट हैज माने समथिंग टू डू विथ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव so that can be represented as plus माने जनरली तमे जते हायर स्टडीज करिवो whenever you go for higher studies तमको ये जो सिंपल इक्वेशन तमे लिखिबनी in that case you can write this type of equation e0 sin kx plus or minus omega t empty you can represent and also in higher studies you will not come across this sin and cos
सेठी कोन हे जीवो तमर ए जो ताको कोन कोनती that will be complex conjugate ताको कोनती हैला मोर भूली गेलेनी सेडा so that will be something like this complex conjugate is I star एमती कोन सब अछि मु भूली गेलेनी एग्जैक्टली मन नै सो सेमती एटा को रिप्रेजेंट करा जाय गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो इक्वेशन टा हैला एटा सब ता भितर मैथमेटिकल फिजिक्स आसीबो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आसीबो तो विभिन्न प्रकार जिंस अछि इट हैज नथिंग टू डू विथ दैट तमे जोटा कहउछो -2 पाई ओमेगा +2 पाई ओमेगा देयर इज नथिंग कॉल्ड -2 पाई ओमेगा फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी है -2 पाई ओमेगा +2 पाई ओमेगा से तो कोन अछि मु जेमति कहली जोटा बेसिक आइडिया इज गोटे तीनटा एक्सिस अछि गोटे पॉजिटिव एक्सिस रे जाउची कि नेगेटिव एक्सिस रे तमर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अछि सो सेही बेसिस रे ए जिंसटा को लिखाइ छी ओके सो ए दिटा कथा सरला तापरे आमे आगु जीवा ना नहीं यस सर आगु चलो Yes, sir. so an plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz 25 megahertz travels in free space along the x direction. So at a particular point of in space and time, E is equal to this much. देखो 6.3 J cap volt per meter. So what is the magnetic field at this point? अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 25 into 10 to the power 6 hertz megahertz mega माने 10 to the power 6 hertz at a particular point in space and time at an instantaneous time अर्थ electric field is equal to 6.3 J cap volt per meter J cap माने कौन so we can consider y axis J cap माने y axis देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टा प्रोपागेट करछि x डायरेक्शन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट टा अछि हमर कोठे y डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड टा को साइड रे रहइबो जेड z axis डायरेक्शन रे Z. definitely z axis रे रहइबो K Z. cap. so now let us consider let us calculate what is b what is the magnitude of b is equal to e by c जानि छे Yes, Yes, sir. sir. vector non ले भी चलिबो काना we are calculating this magnitude now so 6.3 volt per meter divided by 3 into 10 to the power 8 meter per second 2.1 into 10 to the power minus 8 tesla aqua में calculate करियो 3 divided by 6.3 so 2.1 हे गला into 10 to the power minus 8 8 टा ऊपर पळेला so minus 8 होगा so जदि एमती आमे पाइले ए जो मैग्नेटिक फील्ड रो वैल्यू so now wave is in x direction electric field is in y direction आमे कोन जानि छे e cross b is equal to x direction काहेकि e cross b माने कार वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर कोन रिप्रेजेंट करूची electromagnetic wave propagating in which direction so this is in x direction ता अर्थ कोन j cap cross k cap is equal to I cap आई कैप so magnetic field का direction कहां पे है अभी पॉजिटिव z direction रे magnetic field रो वेक्टर so हमें एठी एम्ति लिख परिबा इलेक्ट्रिक फील्ड जेमति एटी E is equal to 6.3 J cap नै छी सेमति मैग्नेटिक फील्ड is equal to 2.1 into 10 to the power minus 8 K cap. K cap के कैप Tesla Tesla. तो एमती चारटा इक्वेशन तुमको देइथिबो गोटे रे माइनस दे दिथिबो गोटे 2.1 into 10 to the power minus 8 K cap आ गोटे देथिबो minus 2.1 into 10 to the power minus 8 K cap आ गोटे रे सेही 2.1 into 10 to the power 8 J cap दे देथिबो एटा टोटली कैंसिल हो जिवो काइना ऑलरेडी J cap यहां पे है मतलब इसको टोटली कैंसिल करना है और इसको 2.1 into 10 to the power minus 8 हाँ एटी सेमती देथिबो तुमको I cap तो इसको टोटली कैंसिल कर देना है
अभी ये जो दोनों पॉइंट रहा है, उन दोनों में हम लोगों को सिलेक्शन करना है. So selection not on the basis of heat and trial method, always take the vector into consideration. आखि बुझी गोटे मारदेले जा जा मारू मारू महापात्र आ सेमती हबा. बुझेला ब्रजेश्वर? Yes sir. कौन इंटेंसिटी बाहरी बोलना नहीं है भाई? Yes sir. Some neodymium glass lasers can provide 100 terawatt of power in 1 nanosecond pulses at a wavelength of this much mm. How much energy is contained in a single pulse? अच्छा, power 100 terawatt. Terawatt माने कितने वाट? 1 terawatt is equal to how much watt? हला giga माने 10 to the power 9, mega 10 to the 6. 10 to the power 6, tera से tera नु अलगा tera है हला 10 to the power 12, pico 10 to Hepto. the power 10 to minus the 2, power minus for me 10 to 10 to the the power 15. minus 15. nano 10 to the minus 9. 9. micro 10 to the power minus 6. हला. So these are different representations. फॉर्मी को एमती फेम्टोमीटर भी लिखा जाए है ना 10 to the power minus 15. So power is this much and time given is 1 nanosecond pulse. So delta t किंबा t is equal to 1 into 10 to the power minus 9 seconds. Nanosecond माने 10 to the power minus 9 seconds. How much energy is contained in a single pulse? Power into time will give you energy. So ये wavelength सहित हमर किछि संपर्क नाही. Okay, so खाली just एंती style रे दीछि 10 to the power 12 into 1 into 10 to the power minus 9 कितना 1.0 into 10 to the power 10 to the power 5. 5 5. joule. How much energy is contained in a single joule? Okay, Okay. क्या चौधरी समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. Very good. A plane electromagnetic wave has a maximum electric field magnitude of 5 volt per meter. Power is equal to So energy by time pa. Power is equal to energy per time pa. Power equal to energy per time. Na power into time is equal to energy. Sir से दी गुड्डे अच्छे को गुड्डे. So a plane electromagnetic wave has a maximum electric field of this much volt per meter. So find the magnetic field amplitude and wave intensity. को हो गया magnetic field amplitude कौन है वो? आसिला केते को 5 divided by 3 केते को Sir केते 1.66. 1.66. 1.66 into 10 to the power minus 8 Tesla है ना magnetic field. What is the wave intensity? Formula क्या है? Intensity is equal to S average is equal to what? କହିଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ
CBm square divided by 2 mu 0 or equal to half EM square divided by C mu 0 ହେଲା। So any equation पकाओ आंसर मिलियो CBm square by 2 mu 0 पकाओ एका कथा। Find the magnetic field amplitude and wave intensity बुझियला अब अच्छी नहीं। So now टाइम अच्छी जदि मुझे रेडिएशन प्रेशर की पचारुला टिके अच्छी हैला टिके पढ़ी देबा। हाँ ये तो हम लोग इंटेंसिटी तक पढ़े फिर टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। प्रेशर माने गोटे रेडिएशन जेतेबेले कोनसी गोटे मानकर गोटे कंटेनर भितरे हम गोटे रेडिएशन से जाय कि गोटे गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज गोटे कंटेनर भितरे हम पास करछे थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग हम पास करछे। सो एक रेडिएशन जाय कि यहाँ पे स्ट्राइक किया फिर वहां से रिफ्लेक्शन होगा कि ट्रांसमिशन होगा कि टोटल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा depending upon they follow the laws of reflection refraction जेमते कहली सेमती सेही जो सब रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन ई सब जो कंटेनर भीतर होउची किबा गोटे वॉल रे जाईकरी गोटे रेडिएशन बाडी होउची। सो ये जो ये एक प्रेशर डालता है ये वॉल में जहां पे स्ट्राइक करता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर डालता है जैसे कि एक बॉडी जब जाके दूसरे बॉडी पे हिट होता है सो ए प्रेशर इज माने एक्सर्टेड ऑन a force is exerted or a pressure is exerted on that body. Similarly this is also same kind of phenomena। तो सेटा को हमें कहउचे रेडिएशन प्रेशर। तापरे हमें तार फार्मूला बाहर करले जदि टोटली एब्जॉर्ब हो जाउची सो डेल्टा यू माने टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस वॉल रो माने कर एनर्जी थिला x रेडिएशन बाडी हैला परे वॉल रो एनर्जी केते होची सो दैट इज डेल्टा यू the change in এটা তো energy of the মোমেন্টাম টা container divided এটা এটা momentum টা মোমেন্ট sorry so delta p is equal to momentum सेमती जब देखिबा हमें delta p is equal to delta u by c can energy divided by velocity is will give you the rate of change of momentum किंबा momentum simply momentum okay so delta जदि total reflection back along the path माने totally बाडे हैला पुनी total electromagnetic wave reflect करूची rebound करूची along a different path तो ताको हमें कोन लिखिबा 2 delta u by c सेटा होची तमरो एटा सब क्लासिकल मेकानिक्स सेटा माने बट जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ए सब जो जिंस दे फॉलो क्वांटम मैकेनिकल लॉ किंतु क्वांटम मैकेनिक्स तमरो ई जो scope of the syllabus nahi so I am talking about this classical phenomena so del 2 delta u divided by c eta को हमें कहबा total reflection तापरे हमें न्यूटन सेकंड लॉ रो हमें जानि छे the rate of change of linear momentum is called force तापरे हमें intensity हमें जानि छे power by area divided is equal to energy by time by area so तमे हमें ताको रिप्रेजेंट करले गोटे delta u is equal to ia delta t ia delta t t टा भी तळु आछी तो दीटा को एठी मल्टीप्लाई हो जाउची so that is equal to the rate of change of energy or the change in energy so if the energy is completely absorbed हमें फोर्स को एमती रिप्रेजेंट कर परिबा ia divided by c and total reflection जदी हो जाउची 2ia divided by c ताको हमें नेले कोन force per unit area on an object due to radiation is the radiation pressure similarly I by c is the total absorption case में और total reflection case में 2i divided by c ता माने कोन माने जति हमें प्रॉब्लम जते आसीबो so we know the value of I that is intensity that is called pointing vector average okay average pointing vector तो ये सब जो प्रॉब्लम उडा हमें सॉल्व करले जस्ट सेठी जदी पचार छी हमको प्रेशर विषय रे कि किबा कोन जदी गोटे दिटा प्रॉब्लम मु पाई भी दे देबी तो डिवाइडेड बाय c कर दवा जदी we will get the radiation pressure बुझियला आ कोन को एटा तो करथिले 1 by root over of lc आ की कोन कहबो नले